Hello everyone, welcome to today's vlog. I'm Chelsea. So if you're new to my channel, make sure you subscribe and join the family, guys. So today is the last day. Today I'm traveling back to United States. So in this video, I quickly want to show you what I'm packing. And actually I never vlog like जाने वाला part because usually बहुत पैनिक होता है and then I'm sad and I don't want to vlog anymore because airport पे जाते जाते I'm crying and all that. But I thought that just give it a try and इस बार vlog करके देखते हैं. Also I wanted to show you guys in person that मैं क्या पैक करके लेकर जाती हूँ for all the students out there, like all my student viewers out there. So I'm just gonna quickly show you what I'm packing and then we will continue the vlog. हमारा कतार एयरवेज एयरलाइंस है जिससे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं. यूएस से इंडिया का भी मैंने व्लॉग किया है, उसमें भी हमने सेम फ्लाइट लिया था. सो वो बेसिकली आपको अलाउ करते हैं 2 सूटकेसेस 23 kgs के एंड देन 1 7 kgs के, एंड उसके अलावा आपको बैकपैक वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होता है. सो ये बेसिकली मेरे बड़े सूटकेसेस हैं. सो चीज़ें जो मैं ले जा रही हूँ वो बेसिकली ये लाइक टूथपेस्ट है, मेडिसिन्स हैं, ये तो सारी मेरी इंगेजमेंट की चीज़ें हैं जो मुझे मिली थी. सो आई एम जस्ट टेकिंग देम बैक एंड देन आई हैव सम लाइक बैग स्ट्रिप्स, देन क्लोथ्स, एंड देन मैं अदर सूटकेस ओपन करूंगी एंड देन आई एम गोना शो यू लाइक द अदर थिंग्स विच इज़ एक्चुअली द मेन थिंग्स दैट आई एम टेकिंग. आई थिंक इसमें सिर्फ मेरे कपड़े ही होंगे. या टिप नंबर 1 जो चीज़ें आपको डेफिनेटली ले जानी चाहिए एज अ स्टूडेंट और इफ़ यू वांट टू इवन लाइक नॉर्मल कैरी करना, वो है कि घर के पीजे सेट्स एंड ऑल, बिकॉज इंडिया में काफ़ी अच्छे मिलते हैं मिंत्रा पे एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल, वेरी अफोर्डेबल एज वेल, एंड लाइक इस टाइप के पजामे. एंड देन आई एम कैरिंग लिटरली 6 पीसेज ऑफ बेडशीट बिकॉज इंडिया में बेडशीट, कॉटन बेडशीट स्पेशली बहुत अच्छे मिलते हैं डिफरेंट डिज़ाइन में, दे आर रियली नाइस. एंड यूएस में कॉटन बेडशीट्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं एंड ये दे डोंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ डिज़ाइन एंड ऑल. एंड मुझे लिटरली इस छोटे रूम में पैकिंग करना पड़ा बिकॉज सिम्बा बार बार ही आएगा एंड चीज़ें उठा के लेके जाएगा. देन आई एम गोइंग टू शो यू दैट वन बिकॉज उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक दैट आई एम कैरिंग. And the other thing that I am taking with me is this one. Like this is for doing the dal ka tadka and all. So I would suggest you to carry some of the utensils, like something to make chapatis on, or pressure cooker, or some of the like dishes because they are kind of expensive in US. I have made a whole another video like what you should bring from India, and this is just me showing you what I actually take. So I'm taking this one this time, and I already have like you know the other things that I'm telling you to make chapatis and all. So this is what I'm carrying, and I'm also carrying the medicines, but I do have a prescription of like all these medicines. And this is what I did a last minute shopping. So I have these chips and all. So you get in India you get this one for like 10 or 20 rupees. In US you get for one for like I don't know 70 to 100 to I think 140 rupees. So I will suggest you if you like chips, kurkure and all, then you should definitely carry that. And you can also carry these like random stuff if you want and if you have space. And then on the other side, the other thing that I would like you to, so I'm also taking this Maggi masala with me because I love Maggi masala. So in India you get this one for 5 rupees. In US you have to pay 140 rupees for this one. And I'm carrying a bunch of these like you know cotton bed sheets, and these all are from Myntra, and if you want I can put the links in the description box. And this one is my favorite. So this is one of my bags. जो भी आपकी अदर चीज़ें होती हैं जो आप कैरी करते हो लाइक मेडिसिन, स्पाइसेस एंड ऑल दोज थिंग्स, वो आप मेक श्योर करो कि जो आपके जो चेक इन लगेज हैं उसमें डालो. इसमें आप बस अपने लैपटॉप्स एंड ऑल दैट स्टफ डालो. एंड सिम्बा इज़ लाइक वेरी सैड, एंड जब भी मैं कुछ लाइक चेंज वेंज कर रही हूँ या कुछ भी थोड़ा सा भी रेडी हो रही हूँ वो देख रहा है, एंड वो लिटरली रूम्स के दोनों साइड के बीच में बैठा हुआ है. तो कहीं जा रही हो तुम लाइक सिम्बा, हाय हाय सिम्बा, हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो. Oh, you don't want to do hello? Oh, I'm gonna miss you. Bye. Guys, so हम लोग एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं. We got our luggage. हमने लगेज का वेट वगैरह भी चेक कर लिया. It was really sad leaving them. My mom was like literally. So yeah, first now we are going to give our bags and we'll take the boarding pass.
हे गाइस, सो व्लॉग अपडेट टाइम। सो वी आर डन विथ आवर सिक्योरिटी चेक। उन्होंने सारे बैग्स सब ओपन करवा के देख लिए हैं। सो फनी स्टोरी, मेरा डियोर का लिपस्टिक बैग जो भी था, सो वो उन्होंने ओपन कराया। दे वर कंफ्यूज कि वो क्या था। सो आई हैड टू ओपन लाइक लिटरली आई थिंक 2 लिपस्टिक्स एंड मुझे दिखाना पड़ा दैट कि वो क्या है। सो मैं अभी एक्चुअली फेस टाइम कर रही हूँ ये देखने के लिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं एंड सिम्बा सो गया या नहीं। यूजुअली वो रात में बहुत शरारत करता है, इज़ वेरी नॉटी। आई एम फीलिंग रियली सैड गाइज। कल से फिर से हमारा डेली का जो स्केड्यूल है वो स्टार्ट हो जाएगा। खाना बनाओ, ऑफिस करो एंड अकेले रहने का। एंड ऑल यू कैन डू इज़ लाइक व्हाट्सएप कॉल एंड आई एम गोना मिस एवरीवन। इट्स जस्ट सो फ्रस्ट्रेटिंग। लाइक किसी ने मुझसे यूट्यूब में कमेंट में पूछा था व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट। सो दिस इज़ द वर्स्ट पार्ट, लाइक अबाउट लिविंग इन US, like leaving your family, leaving your mom, and you know, to just see her crying, it is just so frustrating and so bad. Like every time, like मैं 3 years से आ रही हूँ and every year it gets harder and harder, and next year I'm getting married, as you know, so it is just the most frustrating feeling in the world. Have anything to say? Yeah, I also feel the same, but yeah, I don't express it that much as you. Yeah, because he is getting married, but he don't have to switch houses though, right? He don't have to leave his family. So my mom was crying this time, like she was crying really bad because from next year, like अब मैं शादी के टाइम आऊँगी and you know आपको पता कैसा chaos होता है, and then I'll go to my in-laws and then I'll come back to United States. So it's not going to be the same thing, like you know जैसे बैठ के घर पे chill करना and all. You don't have to worry about anything. So yeah. That's it. I mean, that's the reason she was crying. So guys, अब हम लोग फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं फाइनली। बट इस बार का काफ़ी लाइक लेस हेक्टिक था, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं था। अभी एक्चुअली हम लोग वॉशरूम जा रहे थे, बट हमें ये शॉप टाइप का दिख गया जिसमें सारी गोल्ड की चीज़ें मिल रही हैं एंड आई थिंक इट्स रियली प्रिटी। एंड ये गोल्ड बिस्किट्स हैं एंड देन ये पेंडेंट सेट्स हैं। हे गाइस, सो अभी हम लोग दोहा में हैं एंड हमने बड़ी सी गोल्ड की शॉप देखी जो कि हमने आपको दिखाया। बट यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस इंडिया से ज़्यादा थे, राइट? आई थिंक 6000 पर ग्राम था। इंडिया में भी 5000 पर ग्राम था। या सो मे बी आई थिंक ये एयरपोर्ट का शॉप होगा इसलिए। सो अभी हम लोग वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है बिकॉज बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है ये। एंड अब मैं बस वेट कर रही हूँ अपने सेकेंड फ़्लाइट बोर्ड करने का एंड सो जाने का दोबारा से। बट दोहा का ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड दे हैव सम रियली नाइस स्टोर्स। सो वी हैव रीच्ड अटलांटा। सब कुछ स्मूथ था, इट वाज वेरी स्मूथ ट्रिप। एंड अभी आई थिंक 6 o'clock हो रहे हैं, नहीं 5 o'clock समथिंग, 5 something हो रहा है अटलांटा में। एंड फाइनली आई एम इन अटलांटा एंड AC इतनी ज़्यादा उन लोगों ने फ्लाइट में चला रखी थी, ओह माय गॉड। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा लगेज मेरे साथ है, सारी चीज़ें, सारे बैग्स मुझे एज इट इज़ मिल गए एंड हम लोग सेफली एंड स्मूथली पहुँच गए। एंड इस इंटायर ट्रिप आई वाज स्लीपिंग फॉर सम रीज़न, लाइक so yeah, now we are going